Good morning students. Welcome back to science class of 7th after your periodic test examination. Children, I hope that everybody have done well in your periodic test examination. Okay, now children, we will be starting the syllabus of term 2 examination. Okay, in term 2 examination, the first chapter is chapter number 13 and the name of the chapter is motion and time. Okay children, so the name of the chapter is motion and time. What do you mean by the word motion? Motion, in simple words we can say it is the movement. Okay, and what is time? Time यानी कि समय. Okay, so let's have a look over the topic. Motion, the movement of an object is called motion. कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है उसको हम क्या कहते हैं? मोशन या मूवमेंट कहते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज टाइम? द मोमेंट और ड्यूरेशन इन विच थिंग्स अकर इज कॉल्ड टाइम. ठीक, ऐसा अवधि या ऐसा आप पीरियड कह सकते हैं जिसमें कोई भी चीज होती है या घटित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? टाइम. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मोशन एंड time. So what is motion? The movement of an object or the you can say the transfer of the object from one place to another is called as motion. And what is time? It is the moment or duration. ठीक, it is the time interval in which things occur. Okay, now the children, you know, for example मैं कह रही हूँ कि the car is in motion. So when a car changes its position with respect to time, we can say that car is in motion. कोई कार या ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रही है? जब वो अपना पोजीशन चेंज करती है with respect to the time. Okay, different objects have different types of motion. Okay, and all motions are not same. Different objects have different motion. Okay children, so an object is said to be in motion when it changes its position with time. कोई भी ऑब्जेक्ट कब मोशन में होगा? जब वो अपना पोजीशन चेंज करता है with time. Okay, so in this chapter we are going to study about different types of motion. So different types of motion are 4 types here. The 4 important types of motion are: first one is rectilinear motion, second one is circular motion, third one is rotational motion, and fourth one is periodic motion. Okay, then what do you mean by the word rectilinear? Linear means straight. ऐसा मोशन जो कि स्ट्रेट लाइन में होता है या सीधा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन. When an object is moving in a straight line, जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसे हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मार्च पास्ट ऑफ ए सोल्जर्स इन ए परेड. जो मार्च पास्ट करते हैं सोल्जर्स, वो किस में होता है? स्ट्रेट लाइन में होता है. अ बुलक कार्ट मूविंग ऑन अ रोड, स्ट्रेट रोड. एग्जाम्पल और क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल, यस, अ ट्रेन मूविंग ऑन ए रेलवे ब्रिज. ओके, सो these are some examples of rectilinear motion. So when an object moves in a straight line, it is called as rectilinear motion. Now the second one is circular motion. ये क्या होता है? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ. जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है, उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. आप देखते हैं जो सन होता है वो फिक्स्ड होता है और अर्थ क्या करता है? उसका सर्कल लगाता है, रेवोल्यूशन करता है. ओके, इन द सेम वे और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? यस, द पैडल्स ऑफ द बाइसाइकिल. ठीक, फिर मैरी गो राउंड, जो झूला होता है वो भी सर्कुलर मोशन में जाता है. ओके, सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन. व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर मोशन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, उसे हम क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन कहेंगे. एंड द थर्ड वन इज रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मतलब रोटेट करना, मतलब अपनी ही एक्सिस पे वो फिक्स्ड करेगा, बस वो क्या होगा? इस तरह से रोटेट होगा. इसमें क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट टर्न्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, इसमें होता है कि ऑब्जेक्ट खुद नहीं मूव करता, इट इज फिक्स्ड ऑन ए पोजिशन एंड इट मूव्स लाइक दिस. ओके, सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज rotational motion.
ओके, एग्जाम्पल द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि आपको पता है देयर आर टू मोशंस और मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। फर्स्ट वन इज रोटेशन एंड सेकंड वन इज रेवोल्यूशन। रोटेशन में क्या होता है, द अर्थ इज फिक्स्ड ऑन इट्स ओन एक्सिस एंड इट्स रोटेट्स which causes day and night, okay, and it takes 24 hours to complete one rotation. And the second one is revolution, that is the movement of the earth around the sun. इसमें वो क्या करती है, चक्कर लगाती है, जो कि हमारा सर्कुलर मोशन में आएगा। और जो रोटेशन है अर्थ का वो क्या होगा, रोटेशनल मोशन में आएगा। ओके चिल्ड्रेन, फॉर एग्जाम्पल आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं रोटेशनल मोशन का। क्या होता है रोटेशनल मोशन, यस, द ब्लेड्स ऑफ द फैन। अब फैन क्या है, फिक्स्ड है, लेकिन जो उसके ब्लेड्स क्या है वो रोटेट करते हैं। आप उसी तरह टॉप भी ले सकते हैं, लट्टू। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ रोटेशनल मोशन। नाउ वी विल स्टडी द नेक्स्ट मोशन, दैट इज पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, अब नाम से ही पता चल रहा है ऐसा मोशन जो पीरियड के अकॉर्डिंग होगा, मीन्स रेगुलर इंटरवल पे होगा। द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, ऐसा मोशन जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद दोबारा रिपीट होगा और वो प्रोसेस गो ऑन होता जाएगा, वैसे मोशन को हम क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन कहेंगे। पीरियोडिक मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मूवमेंट ऑफ अ स्विंग, मोशन ऑफ अ स्विंग, जैसे झूले को एक बार हम आगे जाता है, एक बार पीछे आता है, आगे पीछे, ओके। एंड वी कैन से द ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम, है ना, पेंडुलम क्लॉक जो होता है वो एक बार इस तरफ ऑसिलेट करता है, इस तरह। तो ऐसे मोशन को जो कि रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल के बाद रिपीट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मोशन, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ओके चिल्ड्रन, सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मोशन, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, then periodic motion and rotational motion. Now we will study about the slow and fast moving object. कैसे हम कहेंगे, how we will say that an object is a fast or object is a slow. Okay, we have experienced in our daily life that some objects are very fast whereas some are very slow. Okay, for example, the distance from your home to school is 4 kilometers. Okay, and if you are going by bicycle it takes 20 minutes to reach there, but if you are going to school by bus hardly it takes 5 minutes. So you can say that bicycle is slower than bus or bus is faster than bicycle. Okay, so some objects have जिनकी स्पीड ज्यादा होगी वो क्या होंगे, फास्ट होंगे, और जिनकी स्पीड कम होगी वो ऑटोमेटिकली स्लो होंगे। सो बिफोर दैट व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड स्पीड, स्पीड यानी कि गति। हम क्या कहते हैं, द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। जितना भी डिस्टेंस कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में कवर करता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। ओके, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एज स्पीड, or the distance traveled by an object in unit time is called as speed. A slow moving object is said to have a low speed. जो कोई slow object होगा तो उसकी speed भी क्या होगी, slow होगी, है ना। अगर हम slow चल रहे हैं तो हमारी speed क्या है, slow है। But if you are moving fast, that means our speed is very fast. Okay, so a slow moving object is said to have a low speed, when a fast moving object to have a high speed. So the formula of calculating speed is, तो अगर हमको speed का formula निकालना है, so what is the formula of this speed children? Yes, it is the distance traveled by the object upon time taken. Okay, what is the formula? Yes, distance traveled by the object divided by time taken. Suppose a car is moving with a distance, a car covers a distance of 100 किलोमीटर। एक कार ने डिस्टेंस कवर किया 100 किलोमीटर और टाइम उसने लिया 4 आवर्स। अगर हमें स्पीड फाइंड आउट करना है तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या है, 100 किलोमीटर, ओके, एंड टाइम क्या है 4 आवर्स। फिर अगर हमने 4 को 100 से डिवाइड किया तो आंसर हमारा आएगा 25। अब यूनिट की बात हुई तो हमें पता है हम टाइम को किस में कैलकुलेट करते हैं, मिनट में,
ठीक है, सेकेंड में और आवर्स, ओके, ठीक है। और लॉन्गर डिस्टेंस को अगर हमें कैलकुलेट करना है दैट इज डन इन मीटर, सॉरी किलोमीटर। लॉन्गर डिस्टेंस को हम किस में करते हैं, किलोमीटर में करते हैं। तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस है 100 किलोमीटर और टाइम है 4 आवर्स, तो 100 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 25, और फिर हमने इसका यूनिट ले लिया किलोमीटर और इसका आवर ले लिया किलोमीटर पर आवर, मतलब 25 किलोमीटर प्रति घंटे। एक घंटे में 25 किलोमीटर वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करता है and it is the speed of the object. So what is the formula for calculating the speed? Yes, it is the distance traveled by the object by time taken. So children, as I have explained you that the formula of speed is equal to distance traveled by time taken, and from this formula we can rearrange two formula and get other two new relations. First one is distance traveled. अब हमें इस फॉर्मूला से अगर distance traveled फाइंड आउट करना है, so what will be the distance traveled? It will be speed into time taken. ये speed into time taken हो जाएगा. Now if I want to find the time taken, अगर मुझे time taken फाइंड आउट करना है तो what will be the formula? Distance traveled by speed. Okay, so these are the three relations through which we can find out the time taken of an object, then distance traveled by an object, and speed of an object. Okay children, that's clear to you. Now we will study about the unit of speed. We know that the standard unit of distance is meter. अगर हम standard unit बात करें distance की, that is meter, and standard unit of time is second. So the standard unit of speed is meter per second. इस तो standard unit distance का क्या होगा, distance traveled that is meter and time taken that is second, और short में हम उसको ms लिखते हैं, ठीक। m is meter and s is second. Now if we talk about the smaller units, तो कई smaller units भी हैं, जैसे meter per minute, okay, then centimeter per second and millimeter per second. अगर कोई ऑब्जेक्ट है जैसे कि स्नेल मूव्स वेरी स्लो, सो इफ वी फाइंड आउट द डिस्टेंस स्पीड ऑफ द snail, we can find out in millimeter per second. Okay, now if we talk about the larger units, so the distance can be calculated in kilometer per hour. फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं किलोमीटर पर सेकेंड में भी। जैसे रॉकेट की जो स्पीड होती है, इट इज टू फास्ट, ओके, सो वी विल कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द रॉकेट इन किलोमीटर per second. So children, these are the some units of the speed. So always remember the standard unit of speed is meter per second. Okay, and what is the formula of speed? It's equal to distance traveled by time taken, and from this formula we can take out two other new relations, that is distance traveled is equal to speed into time taken, and time taken is equal to distance traveled by speed. Okay children, so that's all for today. Now I will be giving you homework. So children, today's homework is question number 1, name the 4 important types of motion. Question number 2, differentiate between motion and time. Question number 3 is define speed and also write the formula for calculating the speed. Then 4th one is state the standard unit of speed, and 5th one is which unit of speed will you use to express the speed of an aeroplane. Okay children, so these question answers you have to note down in your homework copy in a neat and clean handwriting, and please learn all the formulas which I have given and explained in the chapter. Okay, and please read all the important key terms of the chapter, read it thoroughly, and be prepared for the upcoming class. The next topic, just go on reading it. Okay children, so that's all for today. Take care of yourself students. Thank you.